नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फार्मास्यूटिक्स लेक्चर बाय डॉक्टर शिल्पी प्रसाद। आज मैं आप लोगों के साथ MCQs के आंसर्स डिस्कस करूंगी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के। ये क्वेश्चन पेपर आज ही बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर बैकलॉग के एग्जाम में आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द हैंसन पैरामीटर कंसिस्ट ऑफ। हैंसन पैरामीटर इज अ टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जिसमें कि सभी तरीके के फोर्स कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे डिस्पर्शन फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड कंपोनेंट हो गया, डाइपोल डाइपोल कंपोनेंट हो गया। ये सारे के सारे फोर्सेस इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसपी apparatus 5 is what type of USP apparatus 5 is. That is, USP apparatuses are used for dissolution testing. These are all dissolution apparatus, and there are 7 types of dissolution apparatus. So USP apparatus 5 is paddle over disc, जो कि basically transdermal patches के लिए use किया जाता है. Next question is diffusion is measured by. Diffusion is measured by Franz diffusion cells that are also called as Franz cells. So answer is Franz cell. It is neither voltameter nor rotating basket apparatus, neither it is paddle apparatus. These all two, like rotating basket apparatus and paddle apparatus, these are dissolution apparatuses, and voltameter is used for measurement of voltage. So the answer is Franz cell. मैं next slide में आपको Franz diffusion cell भी दिखाऊंगी और साथ ही paddle over disc या different types of USP apparatuses devices भी बताऊंगी. When solid change to liquid, it is called as, you all know very well, when solid changes to liquid, it is known as melting. Next is which of the following is also known as supercooled liquids. So supercooled liquids किनको बोलते हैं? Supercooled liquids बोलते हैं amorphous solids को, ना ही ionic solids को बोलते हैं, ना ही molecular solids को, ना ही crystalline solids को. So it is amorphous solids that are also known as supercooled liquids. Then velocity of light is maximum in. Velocity of light is maximum in अगर कोई medium नहीं होगा, मतलब vacuum होगा, तो velocity of light वहाँ पे maximum होगा. So answer will be vacuum. Diamond, water, glass, these are all medium, and through this the velocity of light is less as compared to in vacuum. So vacuum में सबसे ज़्यादा होता है. Dielectric constant of a solvent is a measure of. So dielectric constant is a measure of polarity. ठीक है, पोलैरिटी को मेजर करता है. पोलर नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर कर सकते हैं, जिससे उसकी पोलैरिटी हमको पता चलती है. तो आंसर विल बी पोलैरिटी. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन एप्रेटसेस दिखाऊंगी. तो इसमें आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईपी, अकॉर्डिंग टू यूएसपी, अकॉर्डिंग टू बीपी, जैसे आईपी हो गया इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया होगा यूएसपी, बीपी इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, एंड EP is European Pharmacopoeia. So there are 7 types of dissolution apparatus as per USP Pharmacopoeia, as per the USP, and you can see that type 5 is paddle over disc. So आप देख सकते हैं बेसिकली जो है commonly जो use होता है that is type 1 and type 2, and type 1 is paddle apparatus according to IP, and type 2 is basket apparatus, but type 5 is paddle over disc. And this is the figure of a diagram of a photo of, you can say, that is Franz diffusion cell. And फ्रैंच डिफ्यूजन सेल बेसिकली जो है वो डिफ्यूजन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे हम यहाँ पर एक कोई मेम्ब्रेन लगा देते हैं और इसके थ्रू कोई भी ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन, कोई भी जैसे जेल हो गया या फिर क्रीम्स हो गया, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू कितना परमिएट कर रहा है, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन इवेलुएट विद दिस द हेल्प ऑफ फ्रैंच डिफ्यूजन सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इज यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन. तो कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन आपको ये देखना पड़ेगा कि आयोडीन की सॉल्युबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा होती है. तो आप अगर सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे आयोडीन की, तो आप देखेंगे कि टॉल्विन में उसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, और एनिलीन या हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन इनमें कम होती है. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जिसमें होगी, इसका मतलब हुआ कि आयोडीन उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है उस सॉल्वेंट के साथ. सो आंसर विल बी टॉल्विन. In term pH, H indicates what does H indicate in pH? So normally लोग बोलते हैं power of hydrogen, ये आपको पता ही होगा. So H indicates what? Hydrogen. Then term pH was first used by. pH जो है वो टर्म यूज किया गया था सबसे पहले सोरेनसन द्वारा, इसीलिए pH स्केल को सोरेनसन्स pH स्केल भी बोलते हैं. तो इसका आंसर है सोरेन पीटर लॉरिस्ट सोरेनसन. The mass transfer of molecules in a substance from higher concentration to lower concentration. You know, diffusion is diffusion का definition ही है ये, कि that is a method of a process of mass transfer of molecules in a substance from higher to lower concentration. So answer will be diffusion. Then next question, 12th question, solid particles
इन सॉलिड पार्टिकल्स कैसे रहते हैं सॉलिड में? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल. So neither they move quickly, neither they spread out, nor they form change. So the answer will be closely packed. The next question is pressure required to bring about liquefaction at the critical temperature. सो क्रिटिकल टेम्परेचर जानने के लिए आपको फेज डायग्राम जानना पड़ेगा. जैसे वाटर का ही फेज डायग्राम अगर हम ले लें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगी. तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक क्रिटिकल प्रेशर होता है. व्हेन यू ड्रॉ द फेज डायग्राम बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर देन यू विल फाइंड दैट the temperature or the pressure beyond which the liquid gas cannot be liquefied, that is known as critical temperature, and that pressure is called as critical pressure. So इस temperature या pressure के नीचे आप उसको कम करेंगे तो gases को liquefy कर सकते हैं, but above that liquefaction of gas is not possible. So critical temperature पे liquefaction अगर हो रहा है तो उस समय pressure कितना होगा? तो that will be called as critical pressure. Then next question, the solubility of drug will be high when it is in which form? In its which form? So solubility of drug जो है वो सबसे ज़्यादा होता है metastable stage में. Metastable in terms of metastable state. So stable में चूँकि उसकी free energy बहुत ही कम रहती है, इसकी solubility भी कम रहती है. Unstable तो mostly ज़्यादातर कोई चीज़ unstable ज़्यादा देर तक रहती ही नहीं है, वो that tries to transform in the stable form. That's why metastable form has got the highest solubility out of these three. And this is the phase diagram, this is the phase diagram of water. You can see this is the triple point and this is the critical point. Triple point मतलब वो point होता है जहाँ पर कि तीनों phases coexist करते हैं. That means the solid, liquid and gas, all the three phases are in equilibrium condition. And critical point is that point beyond which, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, that means beyond this critical pressure or beyond this critical temperature, you can't distinguish between whether the liquid, it is in liquid form or it is in vapor form. So at that condition the phase is called as the supercritical fluid. So and और इसके ऊपर जो है आप इसको liquefy भी नहीं कर सकते gases को. So this is the point at which, this is the last point and point at which the gases can be liquefied. So at critical point, if the temperature is critical temperature, then the pressure will be called as critical pressure. Next slide देखते हैं. So उसमें last option था none of the above. So answer जो solubility का question था उसमें metastable form will be the most soluble, having the highest solubility. Then solubility curve is a curve drawn between, तो ये graph है जो कि curve है जो कि किसके बीच draw होता है? Solubility and temperature के बीच में draw होता है. So this will be the answer. The next is in vitro dissolution rate studies on drug product are useful in bioavailability evaluation if they are in correlation with. So in vitro dissolution rate studies drug product पे हम इसको करते हैं that are useful in bioavailability evaluation if they are correlated with in vivo. अगर in vivo से correlate करेंगे, that's why it is called as in vitro in vivo correlation studies. तो अगर हम in vivo से correlate करेंगे तभी वो useful है bioavailability determination में. So answer will be in vivo studies in human beings. The next is the refractive index of a material depend upon. So refractive index actually depends on all these three parameters like wavelength of light, temperature, nature of material. These three things actually refractive index depends on all these three things. So answer will be all of the above. The next question, apparatus used to determine surface tension of liquid. So surface tension of liquid मेज़र करने के लिए आप ऐसे भी एक अगर देखें अंदाज भी लगा सकते हैं. जैसे टेंशन पूछा गया, सरफेस टेंशन, सो टेंसियोमीटर विल बी द आंसर. So this is Dewey tensiometer that is used to measure the surface tension of liquid. Capillary tube viscometer viscosity measure करता है, rotometer rotation को measure करता है, and rheometer is also again used for measuring the viscosity. So the answer will be Dewey tensiometer. Then cetrimide creams जो कि antibacterial है, cetrimide antibiotic की तरह use करते हैं. Actually cetrimide is a type of surfactant and that is a type of cationic surfactant. Quaternary ammonium compounds का बना होता है. So cetrimide is an example of cationic surfactant and it has also got antibacterial properties. Which of the following method is or are used to measure unbound drug concentration? So unbounded
स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अनबाउंडेड ड्रग कंसंट्रेशन दैट मीन्स कि जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स प्रोटीन बाइंडेड होते हैं, अब जो अनबाउंडेड है दैट मीन्स दोज दे आर फ्री, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ दोज ड्रग्स? सो दे कैन बी मेजर्ड बाय इवन डायनेमिक डायलिसिस, इक्विलिब्रियम डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब इसमें आपको एक मेम्ब्रेन चाहिए जिसके थ्रू की प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स पार ना कर सके, परमिएट ना कर सके, तो इसके कारण जो फ्री ड्रग है दैट कैन यू कैन डिटरमाइन the concentration of the free drug, that is the unbound drug. So all these three methods can be used for measuring the unbounded drug concentration. So answer is all of the above. Coming to the next slide, so this is long answer type questions and then short answer type questions. So I hope ये सभी questions आपने attempt किए होंगे जितने करने थे, and I think I have gone through all the MCQs. Thank you very much for watching. Keep watching.